मैं डॉक्टर शीतल को इनवाइट करने से पहले उनका परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर शीतल अभी डलास में है, टेक्सास में है, और ये BHMS डॉक्टर हैं। ये CSC सर्टिफाइड है USA से। इन्होंने बिहेवियर थेरेपिस्ट का भी काम किया है US से। इन्होंने PhD किया है हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर कनाडा से, और ये योगा भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, डाइट देते हैं, न्यूट्रिशियस्ट है। मतलब मुझे लगता है मल्टी टैलेंटेड डॉक्टर शीतल आज हमारे साथ हैं। मैं बिना समय जाया किए मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा डॉक्टर शीतल को। थैंक यू वेरी मच, उन्होंने स्पेशली US से हमारे लिए समय निकाला। डॉक्टर शीतल, सब लोग बड़े उत्सुक है आपको सुनने के लिए। मैं सभी लोगों की माफी चाहता हूँ कि हम 8 मिनट लेट चल रहे हैं। आज मेरे वजह से आप सब लोग लेट हो गए, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। और टू डॉक्टर शीतल। Yeah. Thank you, Nilesh. Thank you for the wonderful introduction. Thank you so much. Everybody can hear me? Yes. Okay. First of all, good morning, good afternoon, and good evening for everybody who are joining this call. मैं दोनों तरफ से बात कर दूंगी, हिंदी and English. Okay. I'm Dr. Sheetal. I'm practicing from last 24 years in US, Canada, and as well as in India. I was practicing in India back in 1998. And as well as I did my behavioral therapies. So I'm practicing with relationship issues, autism kids, as well as students' behavior, specialty of my that behavioral counseling. So let me introduce start with the homeopathy first. I wanted to talk about the homeopathic medicines, how it works on your day-to-day life. It's really miraculous. Even living in US from last 20 years, I'm using the homeopathic medicine for everybody. From like it can use for your kids, like बच्चों से लेके अपने आप के लिए भी, senior citizens को भी दे सकते हैं. So let me share little bit of homeopathy. What is homeopathy and how does it work? So homeopathy का founder था, that is from Germany, and 1700 में उसका होम्योपैथी का रिसर्च हो गया 17th centuries में. उसके बाद how come it came to India? There was a Maharaj called Maharaj Ranjit Singh. He was in Lahore, Punjab. He got affected from his vocal cord paralysis. You know, गले का जो paralysis बोलते हैं ना, उसको हो गया था तभी उसी time 18th centuries में. And then all jadibooties, all the medicine that time they used it, but nothing cured him. Then somehow there was one doctor came from, he knows that time, and the doctor from Roman, he came from India, he came from Roman, his name was John Moninger, and he came to Lahore, Punjab that time, and he was a homeopath, he gave the homeopathic medicines to the Maharaja Ranjit Singh, and he completely cured by homeopathic medicine by Dr. John. And then John became his main physician in his court in 18th century. And from that onwards, the doctor was practicing there from almost 25 years in Lahore, Punjab. And then he moved to Calcutta, and then Dr. Sarkar and a lot of people then get involved in homeopathy. And then from that onwards, homeopathy has started. So this is a little about homeopathy. And now homeopathy, what is homeopathy? Based on the lot of principles we call as a doctrines. So principles क्या है, जो जैसे किसी भी पैथी के लिए कोई नियम होते हैं, जैसे होम्योपैथी का भी एक नियम है. उसमें क्या है, होम्योपैथी इज लाइक इट्स बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी इज लाइक्स क्योर लाइक्स. उसका मतलब क्या है, कांटे से कांटा निकलता है. जैसे हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग, all of the people, most of the people knows the law of attraction. So law of attraction works like likes attracts likes. The similar thought attracts similar thoughts. The same bad thoughts attracts bad thoughts. The same principle in homeopathy works as a
like cures like. So इसका मतलब क्या है? एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस किसी हेल्दी इंडिविजुअल में दे दिया तो उसको सेम सिम्टम्स आते हैं, डिसीज सिम्टम्स आते हैं, कंप्लेंट्स आती है. एक मेडिसिन दे दिया हेल्दी इंडिविजुअल को, and that same medicine which can cure the sick person. So that is means by likes cure likes. So there are a lot of homeopathic medicines which we work as a clinically based on the experience from last 24 years. I worked in homeopathy in and out, and I know pathologically, clinical, how homeopathic works. And it's wonders, it really wonders. And it could be from anybody. You can from infants, children, kids, senior citizens, for yourself, anybody can take this medicine. It's easy way to take the medicines without side effects. We can say 99% no side effects for taking the homeopathic medicines. So today my topic is homeopathics in injury and pain. It's a vast topic, but as much as I can cover. So you can keep a kit, injury kit, because you don't know, injury can come anytime in anybody, anytime in life. So you can keep the kit. It is very, very useful. By experience from last 24 years, I'm using this kit and it's really miraculous results it has it. So I'll explain you what is the medicines you can use it in during injury time. So let me share my presentation so that you will get an idea what is exactly the injury kit. Just give me 1 minute. Everybody's okay with my voice and सबको समझ रहा है ना? Yes. Yes, madam. So this is homeopathic remedies for injury, especially. So let me start. Can everybody see that the homeopathic remedies for injury and pain? दिख रहा है ना सबको? Yes, yes. Yes, yes. So the remedy name is Arnica. First name is Arnica montana. When there is a, जब भी कभी लगता है ना आपको किसी को भी, लेकिन पहले लाल होता है, उसके बाद नीला पड़ता है, कभी स्प्रेन होते हैं, वो कंकजन जैसे फीलिंग आता है, बहुत उस टाइम पे कहाँ पे भी लगने दो, शोल्डर्स पे लेने दो, नी पे रहने दो, एनीवेयर इन द एरिया बॉडी के, जब भी जैसे सिचुएशन आती है, जब भी नीला पड़ना लगता है या लाल होता है, एज सुन एज इमीडिएटली कोई फॉल होता है या ब्लो फाइटिंग करते समय और गिरते हैं, उस टाइम पे the medicine name is Arnica montana. You can use, there are a lot of potencies available in India because India is the largest homeopathic sellers in entire world. So you can use, either depend on the injury side, how much bruises or काला नीला पड़ता है, उस कितना है उसका, उसके ऊपर से डिपेंड है. So you can use potency 6 or 30 repeatedly, completely, like couple of days, minimum 3 to 4 days you can use. Then second remedy जब भी बोलते हैं calendula, तो calendula कैसे वर्क होती है, जैसे क्लीन कट आता है, लाइक पेशेंट ऐसे भाग के आता है कि छुरी लग गई है, पूरा कट ऐसे आता है, पूरा क्लीन कट दिखता है और भर नहीं जाता है इमीडिएटली उसको, और कुछ नहीं कर सकते. पेशेंट वाज वेरी वेरी भाग के आता है एंड वेरी एंशियस होता है उस टाइम पे, बिकॉज ओपन होती है ना वूंड कंप्लीटली. उस टाइम पे किसी को भी लग गई ऐसी ओपन वूंड होती है या क्लीन कट होता है, नाइफ से कट गया है, इस टाइम पे यू कैन यूज द रेमेडी नेम इज कैलेंडुला. एंड इसके दोनों को भी, कैलेंडुला आर्निका दोनों को भी ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, क्रीम्स भी आते हैं, लोशंस भी आते हैं, that you can use as a dressing purpose too.
So it will heal the remedy without any antibiotics, without any anti-inflammatory medicines, without any painkiller. You won't guys believe, I never used from last 24 years, not a single painkiller. So that's the work, miraculous results of homeopathy. Then the symphytum, the third remedy is a symphytum, which bone fractures होते हैं, किसी किसी के bone fractures होते हैं and वो भरते नहीं जाते हैं और डॉक्टर्स प्लास्टर्स लगाते हैं. प्लास्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 4 वीक लगते हैं, कभी 5 वीक लगते हैं भरने के लिए. कभी कोई भी बोन एनी बोन, सो तभी भरने के लिए टाइम लगता है. उस टाइम पे अगर ये सिम्फाइटम करके रेमेडी दे दिया तो उसका हीलिंग कैपेसिटी, जो यूनियन ऑफ बोन जो होते हैं ना, इमीडिएटली में वो पूरा के पूरा फ्रैक्चर बोन जो होते हैं भरने स्टार्ट होते हैं. या किसी को हेयर लाइन क्रैक हो गया है, उसके लिए प्लास्टर की भी जरूरत नहीं लगती है, वो रैप बैंडेज लगाते हैं. उस टाइम पे भी अगर सिम्फाइटम ले लिया तो ये हील भी होता है इमीडिएटली. यूनियन ऑफ बोन्स फॉर्म होते हैं विद इन फ्यू डेज में, फ्यू वीक्स में. अगर डॉक्टर ने बोला 6 वीक लगेगा भरने के लिए, अगर आपने उसके साथ सिम्फाइटम ले लिया तो वो बोन विद इन 2 वीक्स में हील हो जाएगा. और ये डे टू डे लाइफ में होता है किसी को भी. एंड थर्ड वन इज, द सेकेंड वन इज लेडमपाल. This is all homeopathic medicines names, and it is easily available in India. You can keep as a kit. जब ये पंक्चर्ड होते हैं वुंड, मीन्स कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट लगते हैं, कोई छुरी का पॉइंट लगता है किसी को काम करते समय, गार्डनिंग करते समय भी होता है. या कभी कभी आजकल तो बहुत सारा फैशन हो गई है, जंगल में घूमते हैं लोग, इट्स जस्ट फॉर फन के लिए भी जाते हैं लोग, तो वहां पे भी स्टिंग्स, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं या स्टिंग्स होते हैं, वो चुभते हैं या काटते हैं. या कभी कभी वो स्पाइडर्स भी बाइट होते हैं. That is it's a normal, I mean it's normal in India also, right? Everybody goes outside and something happens immediately. So pointed or sharp object से और any sting bite से या insect bite से या spider bite से, ऐसे जो injuries होते हैं ना, उसके लिए लेडमपाल is the only remedy of choice, and it works wonderful, and as well as it can work as anti-tetanus. टिटेनस के बदले आप ये इसका every 2 years 1 dose भी ले सकते हैं. और उसने पोटेंसी यूज कर सकते, 200 होता है, 1 m पोटेंसी होती है. सो डिपेंड ऑन द इंजुरी कितना है आपका बड़ा, उसके हिसाब से आप मिनिमम 3 days to 1 week ले सकते हैं. Then the next one is, जब रेमेडी का नाम है कैंथारिस. तो कभी कभी किचन में काम करते समय, कोई भी रहने दो, शेप्स रहने दो, हम लोग भी कभी किचन में काम करते हैं, तो इट वेरी इजी टू बर्न आवर स्किन थ्रू. कभी तेल गिरता है, कभी पानी, हॉट वाटर गिरता है हाथ के ऊपर या कोई बॉडी के ऊपर, या कभी ऑयल करते समय, जलाते समय फटक से हाथ जलता है, या कोई भी स्पॉट्स जैसे इमीडिएट बर्न होता है. तो उसके लिए इमीडिएटली यू कैन यूज द कैंथारिस, इज द ओनली रेमेडी ऑफ चॉइस, बिकॉज इट विल स्टॉप्स द ब्लिस्टर्स. आई डोंट नो द हिंदी वर्ड्स, ब्लिस्टर्स को क्या बोलते हैं, जो ब्लिस्टर्स आते हैं उसमें पानी भरता है इमीडिएटली. अगर कोई भी बर्न होने दो तो इमीडिएटली ब्लिस्टर्स आने लगते हैं, उसमें से पस पानी भरता है, एंड देन उसके बाद पस फॉर्म, क्या बोलते हैं उसको, फोले फोड़ी या फिर फफोले छाले तो सबने ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ना, वो जो बर्न करते समय इमीडिएटली, कोई भी बर्न होने दे, छोटा बर्न होते बड़ा होते, इमीडिएटली वो छाले बोलते हैं ना आप, कोई वो ब्लिस्टर्स आते हैं, उसके पानी भरता है, उसके बाद पस फॉर्म होता है. तो इसके लिए I mean, बाकी सब हम लोग करते हैं, यू कैन यूज द आइस, ब्लैंकेट्स डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, लेकिन in that case if you use the cantaris, this is a remedy which stops the blisters. Even though pus नहीं हो सकता है, it works as an antibiotics too, as well as it will, वो burning sensation होता है, वो blister आने के जो होते हैं ना पानी वाले,
वो भी स्टॉप करता है. एंड इट डिपेंड्स ऑन द, वहाँ पे बहुत सारे बर्न, तो इट्स अ डीप चैप्टर, but depend on the which degree of burn, first degree, second degree, third degree, depend on that. You can start from 30 potency to 1 potency, but first 10 M potency, but first degree burn 100% will be cure in cantheris. Second degree, which is mildly deadly, not much, but third degree, which is more deadly. But first degree and second degree, you can use at home without any antibiotics, without anything. Just take this remedy for a couple of weeks. Wonderful result. You will see the miraculous results after burn. Anything, any burn with water, oil, fire, electric, any kind of burn. And third, the next one is, I'm just running because I don't know the time. The next one is Hypericum. So this is the remedy for the nerve injury. So nerve injury means, लोग बोलते हैं ना कि भी काम कंप्यूटर के काम करते समय लोगों को बहुत पेन होता है, या सेम रिपीटेड जो मोमेंट्स करते हैं उनके लिए बहुत सारा पेन होता है. वो नस बोलते हैं, नस दुखती है या पेन होता है, बहुत कंटिन्यूअसली पेन होता है. कुछ भी रिपोर्ट्स किया, एक्सरे किया, एवरीथिंग व्हाटएवर द थिंग्स दे डिड इट, ब्लड रिपोर्ट, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट स्टिल पेन होता है. दैट इज काइंड ऑफ ergonomical पेन या नर्व पेन, जो नर्व अंदर के नर्व्स के पेन होते हैं ना, उसके लिए यू कैन यूज दिस Hypericum रेमेडी. Hypericum is available in 0/1 potency, 2, 3 or 30C potency, and that nerve pain is so vast, like it will give that shooting kind of pain. बहुत शूटिंग पेन होता है उसमें. कभी कभी पोस्ट ऑपरेटिव भी, कभी कोई ऑपरेशन करने के बाद भी लोगों को कुछ भी एंटी पेन किलर ले लिया, कुछ पेन कम नहीं होता है, बिकॉज वो नर्स में जाता है ऑपरेटिव के बाद भी, एंड बोलते हैं कि कंटिन्यूअस पेन होता ही है, पेन रहता ही है. उस टाइम पे यू कैन यूज दिस रेमेडी Hypericum. और समटाइम्स द स्पाइनल कॉर्ड, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का डिमाइलिनेशन होता है, लोगों को बहुत सारा बैक एक, लंबार एक होता है. उस टाइम पे this is the remedy of choice for the specifically for the nerve pains, any kind of nerve pain. Then the next one is Ruta. So the remedy name is Ruta, which is useful, very very useful for specifically for any eye injuries. Eye में फटाक से इंजरी होती है, कभी समझता ही नहीं आई में इंजरी होती है, इतनी पेनफुल होती है आई की इंजरी. आइस लगाने के बाद पानी, कोल्ड पानी भी लगाते हैं हम लोग, आइस लगाते हैं. उसके बाद सोलन जो एरिया होता है कम होता है, रेडनेस कम होता है उससे, आइस से सोलन और रेडनेस कम होता है. लेकिन जो पेन अंदर होता है ना, दैट इज टेरिबल. You can't believe that, because we cannot do anything in that time. That pain reduce करने के लिए this is the only remedy of choice in homeopathy, RUTA. It's very wonderful, and based on my experience, I've used it so many years, and it's really wonders. It's wonders. So it used as 30 potency, 200, 1M or 10M. Depend on if it is more serious or severe injury, you can go little higher potencies or start with the low potency. So this was for the eye. And then next one is the Rustox. The remedy's name is Rustox, which is for the sprain, muscle sprain होते हैं, या कभी कभी ओवरलिफ्टिंग होता है. ओवरलिफ्टिंग के कारण टेंडन्स, लिगामेंट्स में इंजुरी आती है. That is common everywhere. It's not like purposefully some people will do it. और ओवर स्ट्रेच होते हैं कभी कभी. डू यू नो दैट बैले करते हैं लोग या योगा करते हैं, especially for the beginners, and they don't know, and they try to stretch their muscle as much as they can, but they don't know at the end of the muscle there will be ligaments. It's very very crucial part, and that time they tear the ligaments during any kind of these activities. उस टाइम पे and बहुत continuously उसका पेन रहता है, because it's like fatigue kind of pain continuously होता है. उस टाइम पे remedy of choice is Rustox. So you can use this remedy quite longer time, because ligament pain is more than weeks and weeks. So you can use more than 2-3 weeks also.
So you can use 30 potency, 200 or 1 m. So this is the remedy of choice for rust dogs. And the next one is natrum sulph, which is the head injury होती है किसी किसी को accidents के बाद या कोई भी reason के बाद head injury होती है, और head injury ठीक होती है लेकिन उसके effects आने लगते हैं. वो effects कब आते हैं? Certain days के बाद या certain weeks के बाद. उसमें effects में क्या क्या होता है? Sometimes this kind of symptoms comes, right? Epilepsy, कभी epilepsy होती है, headaches होते हैं, या कभी कभी अस्थमा भी create होता है, और कभी कभी respiratory complaints भी आते हैं. Not only the respiratory complaints because of they have some respiratory issues, it's because of the head injury. Head injury कभी कभी होती है, उसके बाद उनको कितने महीने के बाद वो effects आने लगते हैं. On that type of injury, if somebody has it, you can blindly use the natrum sulph, which is very beautiful remedy, and its potency is 30C, and you can use continuously for a couple of weeks too. And Nilesh, let me know, okay, time, regarding time wise. Actually, time is up, but आप continue कर लो. Oh, time is up. Okay. Yeah, we will finish in next 3 minutes. Okay. Okay, sure. Thank you so much. Thanks a lot. The next one is the conium mac, which is very glandular injury होती है, parotid glands होते हैं या mammary glands, breast में glands को injury होती है. उस time पे you can use the conium mac. Potency I have given the downstairs, and I can share this one also for you, all of you. And then third, the other one is belly spur, which is abdominal injury होती है. कभी कभी internal होती है, abdomen, not external but internal. कोई gymnastics करते समय या कोई sports करते समय, या कभी कभी वो stitches भी open होते हैं after C-section के बाद. अभी तो नहीं है, उस time पे थे. I was in practice in India at that time. It was very common. Common things was like open the stitches for any operation. After operation के बाद stitches open होते थे. उस टाइम पे बहुत abdominal, internal abdominal injury भी होती थी. उस टाइम पे you can use the belly spur for that, specifically for that reason. And if it is more pain, is like abdomen में pain हो रहा है because of loose motion, constipation, or any gastric complaints, then you can use these two remedies, Macphos and Colocint. And then, you know, a couple of people has a rubbing injuries, like shoe bite होते लोगों को, नए shoes डालते हैं तो shoe bite होता है. तो और नहीं तो कोई नया कपड़ा, नायलॉन के कपड़े भी डालते हैं, उसमें से वो rubbing की skin injury होती है. उसके लिए you can use the allium cephas, very safe remedy. You can use 30 or 200 potency. And then next one is Staphylococci, which is for very stabs wound होते हैं किसी किसी को, या सर्जिकल ऑपरेशन करते समय भी, ऑपरेटिव करते सर्जन्स और एनी ऑपरेशंस ऑपरेटिव करते समय भी इंजुरी होती है. उस टाइम इंजुरी के टाइम पे बहुत दर्द होता है, और सर्जिकल ऑपरेशन करते समय भी इंजुरी होती है. उसके लिए Staphylococci you can use it. And there is actually this is not injury related, the ignitia next one. But this is like after accident के बाद या कोई fights के बाद या कोई major accidents या major injury होती है, तो that person will come with the, not because of the injury, that person will come for the mental shock. देख के उनको इतना shock लगता है, लोग ऐसे continuously shocks में रहते हैं, बहुत दिन, बहुत महीने, बहुत weeks में shocks में रहते हैं. Because of the accident होने के बाद उनको जो mentally shock लगता है ना, उसके लिए this is the best remedy for ignitia, very beautiful after the injury shock. And the one more is very deep seated shocks जिसको होते हैं, like continuously लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास अभी मुझे याद है, people आते थे और बोलते थे उसने मुझे चाटा मारा है, उस इतनी मुझे जोर से इंजुरी हो गई है, मेरी इंजुरी थी बढ़ गई है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता हूँ. 4-4, 5-5, 10-10 साल भी लोगों के लिए वो डीप सीटेड शॉक्स, मेंटल शॉक्स बोलते हैं हम लोग, उसमें डीपली सीटेड होते हैं. बोलते नहीं, आई कैनॉट फॉरगेट दैट शॉक, आई कैनॉट फॉरगेट दैट इंसिडेंस. अभी के अभी जैसे कि वैसा इंसिडेंस मेरे सामने है. सो उस टाइम पे यू कैन यूज, दिस इज द बेस्ट रेमेडी, वेरी डीप सीटेड शॉक्स after any fights, after any injury, after any slapping, anything.
the opium. And the last, not in list, this is for the headaches. Very common complaints, very common migraine or one-sided headache, cluster headaches होते हैं, या fever के बाद भी headache होता है, heat के वजह से भी headache होता है. This time you can use the belladonna for 30 or 200 C. I can share this one and these slides for all of you. So you can keep this is a fantastically used. I have been using for the last 24 years, and you can use as a kit so that you can use wherever you wanted this type of medicines, and really to work. Thank you so much. I'm very thank you. And I don't think so we don't have time to question answer, but we can cover next time. Thank you so much. And thank you, Nilesh. And thank you for all the participants for listening very patiently. Thank you. Sheetal, Thank you. Thank you, Sheetal. Excellent presentation. Thank you. Excellent, excellent, madam. For awesome group, I can arrange this kit from Monday onwards. Anybody want, they can contact. I can organize the kit. Thank you, Dr. Sheetal. Oh, Very thank nice you so presentation. much. I can organize a kit. I'm a homeopathic doctor. Thank you, madam. I can organize the kit. Yeah, sure. You can. Yeah, they make a kit and like these are remedies, and this is wonderful. Yes, I will send. I can organize so that it is excellent presentation. With indications, I can prepare a kit. I can send to total awesome group. Yeah, Thank can you. you please Sure. share this presentation also? Yes, I do. I will. Sheetal, share. Sheetal, unmute yourself. Okay. Yeah. Thank Yes, you. Thank you everybody. And याद रखिए कल अपना यूथ के लिए सेशन है दोपहर को 4 से 5:30. Make sure you are inviting all the youths from age 14 to 25. Sheetal, extraordinary session. Thank you very so much. Thank you Thank so you. much. Thank you. So much. Thank you, Nilesh, and thank you for all of them, all of the participants. Thank you so Thank much. you. Thank you. Have a wonderful day. Thank you. Bye.